when clocks allows them. Okay, now clock can be continuous clock, okay, or it can be level, or that means it can be periodic, or no, it can be non-periodic clock. Okay, so first of all we are discussing today gated latches. Okay, gated latches, that is okay, clocked है, clocked flip flop, clocked लिख दिया मैंने वैसे तो flip flop. ओके, सो इसमें क्या है, गेट के थ्रू जो हमारा एक एक्स्ट्रा इनपुट है, इनेबल इनपुट, that will control your input. Okay, if that input allows input variables, okay, to control your flip flop, okay, your latch. So we look at the circuit. So we have a latch. किसका माइक ऑन है? माइक किसका ऑन है? So we have this latches, okay, and then okay, so this is my input. Here I have one more. Okay, so this is my input. जो हमारा latch है, पहले तो latch बनाएंगे हम लोग. Okay, so this is my latch. This is Q bar. Okay, now so this is my latch. What I'm using earlier, non-clocked latch. This is my latch. Now input will be controlled by a gate, another NAND gate. So I have an input. Okay, so this input will be what? We will be having SR flip flop. So S. Okay, then I have one more NAND gate here. Okay, one more NAND gate here. दिख रहा है ना? Okay, and the input is here R. And these two inputs are connected with enable. New enable का मतलब है clock है, जो signal which can give either 0 or 1. Enable can be either 0 or 1. Okay, so one is high logic state, 0 means low logic state. So now it is NAND gate. Okay, these are NAND gates. अगर enable को 0 कर देंगे, so this output will be always 1. 1, yes sir. Okay. This is also Always 1. That means you don't have a control. Okay, you don't have a control on the input have no control on this circuit. Okay, so that's why you never take 0. Okay, so when 0 is there, when these are 0, okay, these inputs become ineffective. Okay, so you have to keep in mind these things. So in order to control this circuit, this enable should be always 1. So when these enables are 1, then only your input will work. Okay, otherwise there's no meaning. So this is your latch. Okay, and this part of circuit, okay, जो हमने extra add किया है, okay, that is called steering gates. Steering, that means controlling gate. Okay, steering control कर रहा है circuit को. Okay, steering gate. So this is the circuit. Okay, so if circuit is clear, then I can go to the truth table. Okay, the logic diagram usually of this gated SR flip flop is given by, we have S R, we have Q bar. Okay, and we have one more variable, enable, EN. Okay, so this is the logic symbol. Okay, now you are gated SR flip flop. So but इसको रब कर दूं क्या? Can I erase this one? Sir, एक मिनट sir. ठीक है सर, एक क्वेश्चन था. हाँ मुझे सर लास्ट क्लास में जो इस फ्लिप में हम लोगों ने देखा था कि 0 पर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्यूएन पे जो वैल्यू था वो क्यूएन प्लस में वो क्या स्टोर हो रहा है? हाँ वही, हाँ बिल्कुल वो वही इसीलिए इसको स्टोर. हाँ, नो चेंज ऑफ स्टेट.
उसके बाद तो स्टोर हो गया वो भी। हाँ, स्टोर के जो पहले से पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट है वो वही रहा, उसको चेंज नहीं किया, स्टोर तो है ऑलरेडी। अब वो जो है वो इनपुट से चेंज नहीं हुआ। ओके, ओके ओके। दैट इज नाउ आई हैव सम स्पेस ज्यादा नहीं इस बोर्ड में, तो मैं डायग्राम और वो अलग से शायद नहीं बना पाऊंगा, छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, सो लेट इट, पहले मुझे फ्लिप को बनाने दो, टेबल बनाने दो। वी है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, एक तो एस है, एक हमारे पास आर है, और क्या है, इनेबल EN. ओके, en. So s है, r है, then we have qn, and then we have qn plus 1. ओके, सो अभी तुम लोग पुट करके देखना। ओके, सो नाउ enable is 1. ओके, s can be 0, r can be 0, so input की वैल्यू 0 0. ओके, and qn is what, qn can be 0 or 1, qn की दो स्टेट हो सकती है, 0 1. ओके, and enable is 1 1. Second state is enable is 1 1. Okay, and this is 0 1, the input values are 0 1, and again this can be, present state can be either 0 or 1. So this is the third case, third table, third possibility. Okay, fourth possibility say this is 1 1. Okay, this can be 1, this can be 0. Okay, and so this is 1 0, this is again can be 0 1. Okay, what is the next possibility? 1 1 1 1 तो हो गया। ओके, नहीं 1 1 नहीं हुआ अभी तक, सो 1 1 1 1 नहीं किया ना अभी। so this is 1 1, this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. okay, this can be again 0 1. नीचे जा रहा है क्या, नीचे चला गया टेबल। ओके, लेट मी इनेबल हरदम हमेशा 1 ही 1 रहेगा, 1 भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, वापस ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो टेबल में तो आप हमेशा 1 1 लिखे हैं। तो अभी लिख रहा हूँ ना, पूरी टेबल बनाई कहाँ है, ओके सर, अभी वापस बना रहा हूँ ना ऊपर से लेके। ओके, एस इनेबल 0 हो जाएगा तो इनइफेक्टिव हो जाएगा ना, इनइफेक्टिव हो जाएगा इनपुट। ओके, qn plus 1. ओके, सो enable 1 1 0 0 0 0 0 1, so 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1. okay, 1 0 1 0 0 1. okay, 1 1. okay, 1 1 1 1. okay, this is the 0 1. okay, so these are our possibilities. Now it can be also 0 0. so when it is 0 0, okay, these inputs are ineffective. okay, this can be 0 1. okay, so now let it check, सर्किट से चेक करो कि qn plus 1 क्या आ रहा है, आप पुट करके देखो, मुझे बताओ क्या आएगा। so if it is enable is 1, okay, so we have a circuit here. okay, we have this one diode. okay, we have S input here, we have another NAND gate. okay, and this is enable, and this is we have R, यहाँ से जा रहा है NAND, दूसरे NAND गेट में। सर फर्स्ट वन नो चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, अभी एक मैं कर लेता हूँ, तुम बताना मुझे। फर्स्ट वन इज, this is one diode, AND gate. okay, so this is AND gate. okay, this is my AND gate here, and this is coming here. okay, now it's ready, q bar. okay, now first state enable is 1, so this is 1 1, this input is 1 1. okay, now you can put 0 0. if you put 0 0, this become 1 1. okay, now if I'm starting from this one, this is 0. okay, this is 1. okay, so 0 goes here, 0 1 0 again, this is 1. okay, this is 1. now this ones go here, so 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 का 1 1 क्या हो जाएगा, 1 अपोजिट 0, तो 0 0 सेट हो रहा है, तो यहाँ पे 0 वापस 0 ही आ रहा है। okay, so and here yeah, no change of state. okay, so this is no change of state. Similarly, you can check for this one also. if you start from 1 here, okay, if you start 1 from here, 0 from here, so this will be your
and this is your always 1 1. This come 1 here. Okay, so 1 1 1 1 1 inversion 0 0 0 goes here. Okay, and 1 goes here 0 1. Okay, so there is a no change of state. So this is your no change of state, NC. Okay, now ये बार-बार करके देखा हूँ ये तुमको हाँ बोलिए set condition. हाँ So next is set condition. हाँ Set नेक्स्ट है reset and invalid. नेक्स्ट इज क्या है 0 1. ओके, तो 0 1 पे क्या आएगा 0 0 1 पे हमें ऑलवेज 0 आएगा. दैट विल बी रीसेट. सॉरी मैंने क्या लिख दिया, पे लिख दिया पहले से. ये दिस इज QN. ओके, तो QN क्या यहाँ पे क्या आएगा सेम 0 1. ओके, स्टेट क्या है यहाँ पर स्टेट इज योर no change state. Okay, and next is when you put 0 1, so you'll get always restate. Okay, reset, you'll get reset. मैं आ लिखता हूँ खाली reset. Okay, and similarly if you put 1 0, मैं एक एक दिखा दूंगा. If you put 1 0, then it will be 1 1, that will be set state. Okay, and if you put 1 1 1 1, that will be invalid state. Okay, that will be your invalid state. That can be x. This is your invalid state I. Okay, and when you put 0 0, then what will happen? You get no change of state. Invalid. And 0 0 पे no change of state, no change of state आएगा. Okay, तो चेक कर लेते हैं एक बार. So ये तो चेक कर लिया हमने. 0 1 0 1 पे देखो 0 1. ओके, सो यू हैव इसको मिटा दो. ओके, सो इफ आई पुट 0 हियर 1 हियर एंड दिस इज माय 0, दिस इज माय 1. ओके, सो एज 0 0 0 होते ही ये आ क्या 1. ओके, एंड 1 1 तो ये 0. ओके, नाउ दिस इज 1 and this is 1 coming here, this is 0 coming here. So 1 1, this becomes 0. Okay, and 0 0 1. Okay, सेट स्टेट नहीं है. 0 का 0 रहा, या 1 का 1 ही रहा. तो यहाँ पे रीसेट स्टेट है. Q0 मतलब क्या है? रीसेट है. Q1 इक्वल टू सेट, Q0 इक्वल टू रीसेट. तो ये रीसेट स्टेट है. ओके, और अगर आप इसको 1 कर दोगे, सपोज आई मेक इट 1 एंड दिस 0. ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा था हमारे पास 1, यहाँ से हमारे पास 0. तो ये 1, तो 1 0 क्या हो जाता है 1 0 0 0 का ये 1. ओके, एंड दिस 1 गोस हियर. ओके, दिस 1 गो हियर. यहाँ से क्या आ रहा है ऑलरेडी 1 आ रहा है. तो 1 1 1 0. तो हमेशा 0 आएगा. सो व्हेन यू पुट 0 1 इनपुट, you always get Q is equal to 0. Okay, and Q is equal to 0 means this is a reset state. Clear? So Q equals to 0 means reset and Q equals to 1 means set now, sir. Yes. Okay, sir. Q is equal to 0 means reset. Q is equal to 1 means set. Higher means set. 0 means reset. Okay, तभी हमको क्या मिल रहा है? Reset मिल रहा है 0 1 के लिए. Yes, Okay? sir. Similarly, if you apply now 1 0, एक कर देता हूँ मैं. ठीक है, 1 0 वाला कर देता हूँ मैं. 1 0. Okay, so you have now this is 1. So if this is 1, you get this one 0. Okay, and this is 0. You get 0, this you get 1. Okay, now suppose beginning it is 0, so this is 0. So 1 0 0, you get 1 here. Okay, and this 1 go here, 1 go here, and 0 here. 1 0 0, you get 1 here. Okay, and again ये 1 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये गलत है. Okay, so you have to again put this here 1. Set. हाँ, so ये क्या, ये 0 हो गया वापस, ये सेट स्टेट है. ओके, so you get always Q next state is always 1. This is the present state. Okay, present state, this is the next state. The next state will be always 1 1. Okay, so this is your set state. Okay, similarly now if you apply 1 1, okay, so 1 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 1 के लिए क्या हो जाएगा? You apply 1 here 1 here, 1 1 अप्लाई दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड NAND है 0 हो जाएगा. ये 1 है तो 0 हो जाएगा. ओके, एंड नाउ यू अप्लाई 1 0 0, दिस बिकम 1. ओके, एंड देन यू 0 1 0. ओके, 1, दोनों 1 1 हो गया. Invalid, sir.
So 1 1 is invalid. Okay. कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? It's pretty easy. Okay. I have done so many Yes, sir. Okay. So this is your invalid state. Now last is 0 0. So if you put 0 0, okay. अच्छा 1 1 बाकी है, 1 1 तो हो गया हमारा ना. अब 0 0. अब इनेबल को 0 कर दिया मैंने. इनेबल को 0 कर दिया. Okay. Now enable is 0, and this is R. So this output is always 1. Okay, this output is always 1. We don't know S की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है. ये तो हमेशा 1 1 ही रहेगा. Now you put 0. Okay, 1 here. If this is 0, just 0 go here. 1 0 0, you get 1. 1 go here. 1 1 1 1 1. Inversion 0. Okay, so no change of state. Okay, so there will be, when you enable is 0 0, then also you'll get what? No change of state. Clear? Yes, sir. Okay, so this is was your gated latch. Okay, क्वेश्चंस के हम बाद में करेंगे, पहले हम और भी देख लेते हैं. हाँ बोलिए सर. इसमें एक डाउट हो रहा है कि Q equals to 0 मीन सेट रीसेट स्टेट होता है और नो चेंज में भी Q 0 आ रहा है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट कैसे नहीं करोगे? जो रीसेट स्टेट है उसमें ये दोनों 0 0 है. आप 0 0 0 तब भी 0 0 1 तब भी 0 दे रहा है. यहाँ पे नो चेंज है. 0 का 0 1 का 1. यहाँ पे 0 भी 0 हो जाएगा, 1 भी 0 हो जाएगा. ओके सर. Okay, so this was your gated SR latch. Now put it heading D, the gated D latch. The gated D latch. Okay. So now what happens in gated D latch? Okay. So gated D latch में क्या होगा कि circuit is exactly same. Okay. The circuit is same. You can redraw again. The circuit is exactly same. Only what happens, instead of giving S and R separately, okay, the gated D latch, okay, gated D latch. So instead of giving separate, we take one input D and we take invert of this input, invert of this input, and D dash, D bar we are giving here. समझ में आ रहा है? Instead of giving separate here, okay, I am giving here, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह चाहिए. I am giving here, this is your D, okay, I am inverting this input and I am giving D bar here. तो अभी जो टेबल आएगी उसमें क्या चेंज आएगा बताइए? अगर मैं D बार दे रहा हूँ, 1 नहीं आएगा. वेरी गुड. भी अब क्योंकि मैं 1 दे रहा हूँ और उसका इन्वर्जन दे रहा हूँ, तो ये 1 होगा तो ये 0 होगा. भी अगर S is 1 तो R is 0. If S is 1, S is 0 तो R is 1. 0 1 1 0. That means 1 1 और 0 0 के स्टेट तो है ही नहीं. करेक्ट? Yes, sir. So now we have more simple table, okay, with less entries. So now you can, so this is your D latch gated, okay. Now I can redraw the तो इससे table. फायदा क्या होगा? अब देखो ना, टेबल छोटी हो गई, सिंप्लीफिकेशन आसान है, काम करना आसान है. नो चेंज और कंडीशन नहीं आ जाएंगे, सेट और रीसेट दोनों. ज्यादा इनपुट नहीं है हमारे पास में. सो नाउ EN अंदर जा रहा है. Okay. EN, okay, we have D only, we have QN, and then we have QN plus 1. Okay,
So what I can do now, I can make it enable, okay, and this value can be what? 0, 0, and this can be 0, 1. This can be anything. ये 0, 0 का मतलब क्या है? नहीं, 0, 0 का डाटा मतलब क्या इनपुट को है? 0 और हाँ, डाटा इनपुट को 0 जा रहा है और डी बार 1 हो रहा है. वेरी गुड. ओके, दैट मींस s is 0, r is 1. तो जो पहले पिछली टेबल में जो हम we are taking 0, 1 reset state, that is d0 state. Got my point? When d is 0, d bar is 1. Okay, so this is 0, 1 condition. This is also 0, 1 condition. So 0, 1 condition, that was what? Reset condition in the SR flip flop, gate class of SR flip flop. That is same thing here. Yes, sir. Only we are not writing two variables here. We are writing only one variable here. Okay, and again you make 1, 1. If I make 1, 1, so when I'm making 1, d is 1, d bar is 0. This is the 1, 0 state. Again 0, 1. Okay, and last is what? Auto possibility any. Last you make it 0. When you make it 0, this variable no meaning. Okay, so you always get what? Same 0, 0, no change state. हाँ. सर इसमें जो हमारे पहला जो सेक्शन है ना, जो जहाँ हमने दो नैंड गेट कनेक्ट किए, उसमें जब d 0 होगा तो पहले को यहाँ d जाएगा, नीचे के नीचे वाले को 1 जाएगा. जहाँ 0 जाएगा वो इनसफिशिएंट हो जाएगा ना. पिछली बार कैसे हमने देखा था 0 जाने से यहाँ 1 जाएगा, हमने एक वहाँ यहाँ 1 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा. ठीक है, और यहाँ 0 जाएगा और यहाँ 1, 1 है. तो ये वाला इनइफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, इसलिए तो इस टेबल में इसलिए तो वो है नहीं. इस टेबल में तो एक ही है ना, एक ही है. एक बात सुनो, अब वो यहाँ पे लगा के देखना पड़ेगा ना. इनएफिशिएंट हो गया तो क्या सर्किट को ये तो कंबाइंडली इफेक्ट कर रहा है ना सर्किट को. तो इनफेक्टिव हो गया मतलब क्या है? अभी अब आप डाल के देखो, वेरिएबल करके देखते हैं हम लोग. ठीक है, सो नाउ हाँ बोलिए. यहाँ पे वो 0, 0 एस और मतलब एस आर 0, 0 और 1 कंडीशन तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं आ रहा है. देखते हैं ना कैसे नहीं आ रहा है. ओके, सो यू हैव 0, 1 कंडीशन. दिस इज 0, 1 कंडीशन. 0 कंडीशन में क्या होता है? रीसेट कंडीशन. ओके, सो आई एम अप्लाइंग 0 हियर. So I am applying 0 here. I am applying 1 here. Okay. Now 0, 1, 0. You get 1 always here. Okay. Now 0, and this is 1, 1, 1, 1. You got 0 always here. Okay. Now you have 0 here. तो दोनों 0 हो गए. You have 1 here. So you got both 1. दोनों 1 है. Okay. तो ये हो गया 1. ये हो गया 0. तो सेट हो गया. Okay. And this both are 0. This is 1. Okay. So this is 0. ये तो ठीक है. अब आप तुम्हारा ये भी देख लेते हैं 1 वाला. If it is 1 here, if it is 1 here, it is 0 here. This 1 go here. 1, 0, 0. You get 1 here. This 1 go here. Okay. 1 go here. 1, 1 again 0. आ तो रहा है. So this is your reset state. बीच में से वो हमेशा 1, 1 लेना क्या? पहले जो दोनों में कंबाइन लिखा है वो हमेशा 1, 1 लेना. ये वाला ये नहीं, उसके बाद में जो है कंबाइन ये वाला. अब ये तो फिक्स हो गया ना भाई. ये इनपुट फिक्स हो गया. ये इनेबल 1, 1 है. ये फिक्स होता है तो ये तो हमेशा फिक्स हो गया. आपको खाली यहीं पे चेंज करना है ना. कंबाइन है वो इनेबल है क्या? कंबाइन जो है ये कंबाइन ये वाला इनेबल है. ये इनेबल है ना. 0, 0 पे तो काम करता ही नहीं है, इनइफेक्टिव हो जाता है. ओके, तो अभी तो काम कर रहा है. ओके, सो वी आर गेटिंग व्हाट? This is what? State. This is our state. Okay. So now put 1, 0. 1, 0. Okay. This is 1. I'm putting 1 only. 1, not 1, 0. This is different. I'm putting 1. So I put 1 here. This becomes 0. And this is 0, 1. So this is 1, 1. So this becomes 0. This is 1, 0. This becomes 1. Okay. And 0 is coming here. That's it, sir. Okay, so 0, 1 क्या हो गया? 0, 0, 1 क्या हो गया? 0, 0 का 1, 1 गया यहाँ पे इधर. Okay, 1, 0, 0. You got 1 here. Now this ये 0, 1 अलग थोड़ी आएगा. तो यहाँ इसको 1 करना पड़ेगा. You make it 1. This becomes 0. Okay, that means it is set state.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सेम एग्जैक्टली वही जो हम पहले कर चुके हैं वो सेम ही है। ओके Yes, कुछ sir. नया नहीं कर रहे हैं। मुझे ओनली एक यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हाँ कि जैसे हम लोग ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द गेट करते हैं, जब हम लोग क्यू का जो आउटपुट होता है, जब हम लोग सर रिवर्स में हम लोग क्यू बार को देते हैं, तो हम लोग रिवर्स में हाँ जीरो वाला को सेकंड टाइम क्यों नहीं करते इसमें? भी वो तो आप चेक करना पड़ेगा ना सेट हुआ है कि नहीं हुआ। भाई पहले अभी मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ था ना, यस सर। तो 0 का यहाँ पे 1 है तो हम तो इसी को दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको 1 करना ही पड़ेगा ना जब तक फाइनल सेट नहीं होता। भी आपका लास्ट में चेक करने पे सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 लिखा हुआ या 0 लिखा हुआ या यहाँ 0 लिखा हुआ या 1 लिखा हुआ है। वो तो सेम लिखा हुआ यहाँ पे जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए ना। ओके, जैसे मींस यहाँ पे यहाँ जो पे जो आया जीरो, हाँ आप भी बोलिए। सर मींस यहाँ पे जो जीरो है तो वो वहां पे भी जीरो ही जाएगा। तो और क्या उसी को तो भेज रहे हैं वहां पे। ओके ओके तब उसी को तो ओके भेज सर, रहे हैं, उसी को तो भेज रहे हैं। ओके ठीक उसी है को भेज ठीक रहे है हैं क्योंकि वो वरना तो गलत हो जाएगा ना, वरना तो मतलब इनपुट आप चेंज कर रहे हो। सो अब सेटल हो गया ठीक है। ऐसे ऐसे बाकी बच्चों को भी ऐसे ऐसे कंफ्यूजन आता है कि सर कभी 2 बार घुमा रहे हो कभी 1 बार घुमा रहे हो, वो तो हमको सेटल करना पड़ेगा ना, जो चेंज करना है तो पूरा चेंज करना पड़ेगा ओके जब तक स्टेबल नहीं रहता। ओके so this is your reset state. Okay so you will always get what 1 0 1 1, this is a set state. Okay now this is ये तो हम चेक कर ही चुके हैं पहले भी। 0 1 पे क्या आएगा 0 1। okay so no change of state, no change of state. okay so you can also check. okay एक ही चीज पे बार बार टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। okay this will be simple, you can try it. okay so shall I move another topic? Yes, sir. okay Yes, sir. so this was your gated. okay और गेटेड लेचेस, गेटेड लेचेस का मतलब गेटेड लेचेस को बोलते हैं लेवल ट्रिगरिंग. ओके you are giving, you are enabling, you giving one input. okay but that means that input is not periodic. okay now we are going to apply some periodic signals. okay so that is called your edge triggering. edge triggering. okay and edge triggering can be two types. It can be positive edge triggering. okay it can be negative edge triggering. okay so what do you mean by positive edge triggering or negative edge triggering? so when we are giving now अभी enable के लिए क्या देंगे हम clock देंगे. we are giving now clock. clock means a periodic signal which repeats itself. okay after some period. so this is a repeated signal. so when I'm giving this one, now if transition happens okay during rise of the clock. okay rise is the rise. okay if my transition happens on this when my clock is rising 0 to 1, okay that type of triggering is called positive edge triggering. positive edge triggering. भी वो enable और clock सेम ही तो है, वहां पे भी 0 1 कर रहे थे. okay there also we are giving 0 sometimes 0 sometimes 1. okay okay but that is not periodic. वहां पे कोई we can give randomly, एक टाइम 0 कर दिया फिर पल्स 1 कर दिया फिर 0 कर दिया 1 कर दिया. we can give any time. okay so that is not period. now clock में और enable में difference यही है, clock is periodic. so when it is rising and that time transition take place, that is called positive edge triggering. okay and when it is there is a falling clock. okay falling pulse or falling signal or falling pulse. okay this is rising pulse. okay rise in pulse or rising pulse. if transition take place means when your input become effective in positive here rising time, that is positive triggering. if your input become effective in falling pulse, that is called your negative edge triggering. okay now how to show
how to give symbol for flip flops. Okay, we Sir. are which are either positive triggering or negative triggering. हाँ बोलिए, बोलो Sir, बोलो. you have told कि when signal become active in rise in pulse, then it becomes positive triggering. हाँ, मतलब तो जब भी sir, सिग्नल, जब भी active in ट्रांजिशन, rise. जब जब आपका इनपुट एक्टिव हो रहा है, ओके, Yes sir. राइजिंग टाइम पे एक्टिव हो रहा है, पल्स के राइजिंग टाइम पे एक्टिव हो रहा है. सर ओके, राइजिंग टाइम पे एक्टिव हो रहा है क्या सेंस हुआ? मतलब ये आपका पल्स जब ऊपर जा रहा है, यस सर. उस पॉइंट पे क्वेश्चन तब ट्रांजिशन हो रहा है. ओके, ओके सर. देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव. अगर डाउन पे हो रहा है, देन क्या है, यू आर नेगेटिव. ओके, ओके सर. so now what is the symbol, how to show positive triggering? Okay, so positive triggering, you have suppose SR flip flop. Okay, you have SR flip flop. Okay, you have Q, you have Q bar. अच्छा, इससे पहले okay, we will discuss JK flip flop also ना. Okay, so this is S, this is R, Q. Okay, now the symbol for positive triggering is triangle. Okay, this is a clock. You can write clock here also, you can write clock here. So if it is positive edge triggering, तो logic symbol ये होगा, triangle का symbol होगा. Okay, positive edge triggering. Okay, similarly, if we are keeping same SR flip flop, okay, we are giving and we are putting one in 0 here. Okay, bubble here. Okay, so this clock. Okay, so this is clock CLK and this is Q bar. Okay, in that state, that is called negative edge triggering. क्लियर? अगर कहीं पे सिंबल लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब क्या है, आपका जो ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर होगा, फॉलिंग में. यहाँ पर ट्रांजिशन का होगा आपका राइजिंग में, राइजिंग या राइजिंग पे होगा. So shall I erase this one? Yes sir. Okay, now we'll do what, SR flip flop, S triggered SR flip flop. Okay, so you can make easily, you can make table of SR flip flop. Okay, there will be no change. पहले हम पॉजिटिव और there will be no change. Okay, no change का मतलब क्या है, जो इनेबल के लिए आई थी सेम टेबल आएगी, खाली जहाँ पे इनेबल लिखा है वहां पे क्या क्लॉक बज जाएगा बस. So edge triggering. Okay, so edge triggering में क्या होगा, you have C, you have a SR flip flop. Okay, इसको बोलते हैं SR flip flop. उस वहां पे लैचेस वर्ड करो, इसलिए SR flip flop. Okay, SR flip flop. Okay, edge triggering, edge triggering. Okay, now we have variables, we have a clock, और क्या है, we have S, we have R, we have QN. Okay, and then we have a QN plus 1. So clock is going up, that means inputs are active or enable. Okay, ये 0 0, this can be 0 0 0, this can be 1. So this is same thing we have done. What will come when it is 0 0? What you get? You get 0 1. Okay, you get state, no change state. You get no change state, no change. Okay, same table is same, 1 1. Only जब क्वेश्चन करेंगे तो देखोगे डिफरेंस क्या है. Here is a periodic signal. Okay, so now if similarly if I put here 0 1 0 1 0 1, okay, so you get what, 0 0, reset state. Okay, if you have here 1 1,
1 0 1 0. Okay, you get 1 1. Sorry, you have 0 1. You always get 1 1. Set the state. Then you have 1 1. This is not 1. This is the clock. Okay, clock. Enable clock. Okay, positive direction going clock. Okay, you have 1 1 1 1 0 1. तो 1 1 पे क्या आता है? 1 1 पे क्या? इनवैलिड। यहाँ पे ये डोंट केयर कंडीशन है ये। ओके, इनवैलिड। ओके, और जगह बची हुई है तो मैं वो सेम लिख दो जैसा पहले लिखा था मैंने। इफ इट इज 0 0, ओके, इफ इट इज 0 0 तो क्या हो जाएगा? नो चेंज स्टेट। नीचे वो नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, तो वही तो सेम, इसलिए तो बोल के बता रहा हूँ कि सेम ही लिखना है जैसे जैसे लास्ट में लिखा था। ओके, सो 1 0 ले लिया हमने। ये 1 1 1 1, you have 0 1, you have x x. Okay, this is not valid. Okay, not valid or indeterminate. Okay, now यहाँ पे एक और बना दो, you have 0 0, clock 0 है। ओके, क्लॉक 0 है, ये आप जा रही है मतलब 1 है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे 1 है और ऊपर जा रही है 1 की तरफ, और तो एक्टिव है, ये 0 है क्लॉक का। ओके, सो 0 इनवैलिड क्या है? ये इनपुट इनइफेक्टिव। ओके, एंड यू गेट व्हाट? इनपुट इनइफेक्टिव मींस व्हाट? यू गेट सेम कंडीशन ऑलवेज, दैट इज नो चेंज कंडीशन। Okay, now let me draw the figure for this one. Okay, so figure is same जो हमने पहले प्लॉट किया, सेम फिगर ये, खाली इनेबल को हटा के क्लॉक लिखना है उसमें। ओके, सर्किट तो सेम ही है ना, तभी तो सेम सर्किट सेम, तभी तो सेम आ रहा है, खाली अकरेंस का चेंज है। वहां पे तो जब 0 दोगे, 0 या 1 दोगे तभी ट्रांजिशन होगा, तभी चेंज आएगा। यहाँ पर क्या है, जब 0 की तरफ जा भी रही है, ऊपर जा रही है सिग्नल, तब से ही वो क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, और 0 पे इनपुट आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो सर्किट तो सेम है, सर्किट इज सेम। यू हैव S, you have two NAND gates. Okay, this is now connected to clock. Okay, clock. Okay, I'm short में writing clock है, कुछ और भी बीच में लगता है, वो जरूरत नहीं उसके लिए। That is called pulse, PLD. Okay, so जो pulse जो ट्रांजिशन को अलाउ करता है। Okay, so clock, and here you have NAND gate, एक इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ये ओके, इसका एक तो आ गया इसके पास में, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से इस पे आ रहा है। ओके, सो दिस इज योर क्यू बार, और यहाँ पे बस क्लॉक लगा देना है। सेम है, सेम सर्किट है। सो दिस वाज योर SR फ्लिप फ्लॉप। ओके, नाउ SR फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम है कि when you give 1 1, when you're giving 1 1, that time you're getting not valid state. Okay, अब इसको हमको चेंज करना है, तो ये तो हो गया आपका एज, पहले हो गया एज वाला। ओके, सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट फुट। हाँ बोलिए सर, ये अभी हमने ड्रॉ किया वो पॉजिटिव एज ट्रिगर का है ना? हाँ, पॉजिटिव एज ट्रिगर का है। वो तो क्लॉक लास्ट केस है ना, क्लॉक देखना पड़ेगा। क्लॉक कैसे दे रखी, क्लॉक अगर ऐसे दे रखी, यहाँ पर ऊपर दे रखी है तो ये पॉजिटिव। हाँ बोलिए, लास्ट में क्या हुआ? लास्ट जो केस है उसमें अगर ये मतलब हमने जो अभी जो हमने टेबल ड्रॉ किया है, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर का है तो लास्ट जो केस है ना 0 0, हाँ, वो मतलब उसमें सर इनवैलिड होना चाहिए ना, मतलब उसमें नो चेंज कैसा, मतलब अगर वो पॉजिटिव एज ट्रिगर है।
ऊपर जा रही है तो अलग केस है, जब 0 है तो ये 0 हो गया, और नैंड गेट में ये 0 होते ही ये इनइफेक्टिव नहीं हो गया है, तो नैंड गेट ही ना। अभी नीचे जाते समय नहीं होगा, ऊपर जाते समय ट्रांजिशन टेक प्लेस करेगा। जब 0 आ जाएगा तो जब 0 आ जाएगा तो व्हेन इट इज 0 देन ये तो हमेशा फिक्स हो गया, 1 1 हमेशा फिक्स हो गया, तो ये तो आपके इनपुट तो इनवैलिड हो गया, इनइफेक्टिव हो गया ना। तो सेम जैसे पहले हो रहा था वैसे ही था। पहले क्या है यहाँ पे खाली पहले यहाँ पे यहाँ 1 1 था, अभी 1 1 नहीं है, 1 1 की तरफ जाते ही 1 की तरफ जाते ही 1 उसको 1 1 1 अज्यूम करेंगे, क्योंकि 0 तो नहीं है ना, पल्स पल्स है ना, सडनली तो जा नहीं सकती है, ऐसा नहीं 0 1 लेवल, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड लेवल ट्रिगरिंग। पहले वाला था उसमें 0 1, इसमें तो क्या है कंटिन्यूस जारी है। ओके, तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं से इसलिए थोड़ा नाम में चेंज किया है। और डिफरेंस क्या है, मेन चीज लेवल और इसमें ट्रिगरिंग में फर्क कुछ नहीं है, ये पीरियोडिक है बस, ये कंटिन्यूस बार बार जाएगा। उसमें पीरियड हम डिफाइन कर सकते हैं, जब हमको 1 देना है, जब हमको 0 देना है, दैट वी कैन डिफाइन। हाँ ध्रुवी बोलो, कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना है जो लास्ट केस है, लास्ट केस में पहले में तुमने क्या यहाँ पे 0 0 नहीं लिखा था क्या? लिखा था, लेकिन ये अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तो पॉजिटिव एज के लिए वो सिर्फ आउटपुट अभी कहाँ पॉजिटिव एज है? अब तो हटा दिया ना मैंने, अब तो 0 0 दे रहा हूँ सीधे सीधे ही, क्लॉक का जब 0 आ रहा है, अब मैं कहाँ पॉजिटिव एज दे रहा हूँ? जब 0 0 दे रहे हैं तो बात तो वही है भाई, हमें ये ऐसा थोड़ी ना कि इधर 1 है इधर 0 है भाई। आपका क्लॉक कैसा होता है, ये क्लॉक है आपका, ये ऊपर गया, ओके ऊपर गया मतलब यहाँ तक, यहीं पे ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया, बात तो वही है। आप अगर 0 1 भी दे रहे हो, ओके, तो ये 1 ही तो है, ये 1 ही है, ये लेवल ट्रिगरिंग की तरह है। और यहाँ से जब यहाँ पे आए नीचे आए तो 0 ही है, बात तो वही है। बस फर्क क्या होगा कि ये आपकी जो पल्स है आपकी पीरियोडिक है, कंटिन्यूस आ रही है। सर हाँ सर ऐसा हो सकता है कि जो एज मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग एक साथ हो? वो ऐसे ऐसा कैसे होगा? ये जब एक नहीं, मतलब जो ऊपर जब सिग्नल कैसा दे रहे हो उस पर डिपेंड है ना। आप कैसा, आपका किस तरह का वो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप पॉजिटिव एज ट्रिगर करो या नेगेटिव एज ट्रिगर, ये दोनों में ट्रांजिशन करने से फायदा क्या है भाई? वो तो हाँ ठीक है, अभी देख रहे हैं, अभी नेगेटिव देखा कहाँ, अभी तो नेगेटिव देखेंगे ना। ओके, सो दिस इज योर टेबल विल बी सेम। ओके दुर्वी, shall I move forward? यस सर, Because ये तो 0 0 ही है। ओके, so this is your SR flip flop with edge triggering। अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखना कैसा हो रहा है। अब ये सिमिलरली हमारे पास है डी फ्लिप फ्लॉप विद ट्रिगरिंग भी है, डी फ्लिप फ्लॉप ओके विद एज ट्रिगरिंग। ओके, तो उसमें क्या होगा बताइए? डी में क्या होगा बताइए? तो वो तो टेबल तो सेम ही रहेगा। टेबल तो सेम ही रहेगा। ओके, टेबल तो सेम ही रहेगा, बस खाली चेंज करना है, सर्किट भी सेम रहेगा, बस खाली क्लॉक लगा देना है। हाँ सर चेंज तो कुछ नहीं होगा, चेंज तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, आप बना दीजिए सर्किट। सो आपकी क्या हो जाएगा, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप है, यू हैव एस आर, ओके, यू हैव दिस वन योर positive clock, okay, positive S triggering, okay. Now instead of S what I'll take D equal to S and R equal to क्या, inversion of D, okay. So and this is Q and this is Q bar, Q and Q bar, okay. So this is your transformation of, okay, this from SR to D flip flop, SR to D flip flop। अगर मैं इसको इनपुट कर दूं और दिस इज इक्विवेलेंट, इसको ऐसा भी ऐसा लिखा है, अगर ऐसा हटा दिया है तो हम ऐसा लिखे क्यों? सो वी कैन ओनली पुट डी हियर, ओके, डी इनपुट हियर, ओके, एंड दिस इज योर पॉजिटिव ट्रिगरिंग
and you can write Q and Q bar. This is your D flip flop. D flip flop. Okay, D flip flop. Okay, and the clock is given like this. Then it is called positive triggering. Okay, positive edge triggering. Positive edge triggering. Okay, and table also you can draw same table we can draw. Shall I erase this one? So 1 minute. टेबल आप खुद ही बना लो तो दोबारा। सर अगर हम नेगेटिव एज ट्रिगर देते हैं इस डी फ्लिप फ्लॉप पे, टेबल में कुछ चेंज आएगा? आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इनेबल तो इनेबल होता है। डाउनलोड लिखाना पड़ेगा, खाली वो डिले, अभी बताएंगे, डिले हो जाएगा बस थोड़ा सा, आपका जो ट्रांजिशन है वो डिले हो जाएगा। क्योंकि बस जीरो नहीं आ रहा है, फिर जीरो पे तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है ना, उससे पहले ऊपर कोई भी वैल्यू है तो वो इफेक्टिव रहता है ना। तो अगर तो डिले हो जाएगा, यहाँ पे होगा जल्दी होगा, यहाँ पे थोड़ा डिले होकर होगा। ओके, सो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको क्लॉक कैसे काम करती है। ओके, क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या होती है बताते हैं अभी को। ठीक है, सो नाउ दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो नाउ यू कैन राइट सी डी QN, okay, QN plus 1, and then you have a state. So you can fill the data, okay, and then let us see whether I have written here what is clock. Okay. I have notes with me. Okay, so you have a confusion about what is positive edge triggering or negative edge triggering. Okay, that I'll discuss tomorrow. Okay, I'm not keeping the notes with me. Okay, so that we'll discuss tomorrow when question we kali karenge. So you put it table here, state. Okay, so you can write now cases when it is on. Okay, so when it is on, it can be only 0 0, and this can be your 0 1. Okay, and then this can be your up. Okay, and this can be only 1 1, this can be 0 1, and the last is what, it can be 0 0. तो fill कर दो इसको, टेबल को fill कर दो, put the fill the tables. Okay, so now what we have, T, okay, 0 0 na, 0 0, this is 0 0. So 0 0 में क्या हो जाएगा, ये इनफेक्टिव हो जाएगा। ओके, दिस इज 0 1, 0 1। नाउ 0 0 क्या आएगा यहाँ पर 0 0 पे? 0 0 सर 0 0, और यहाँ पे 0 0 1 पे 0 सर 0 आएगा, क्योंकि ये क्या, ये 0 1 स्टेट है, 0 1 स्टेट है। 0 0 क्या 0 1 स्टेट है, तो रीसेट टी स्टेट है। ओके, नाउ दिस 1 मींस क्या है, 1 0 स्टेट, 1 0 सेट सर सेट, तो 1 1 सेट स्टेट। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, नॉट चेंज, no change. Okay, no change state. So this is a truth table for truth table. Okay, for D flip flop, D flip flop. Okay, तो कल क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लॉक के बता दूंगा क्लॉक से सिग्नल कैसे जनरेट होता है, क्यों उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज, क्यों बोलते हैं नेगेटिव एज। दिस विल डिस्कस टुमारो। So shall I stop here? कुछ डाउट है इसमें? Okay, so I am stopping here. We will meet next class जब भी होगी। सर Okay, sir. हाँ बोलिए। Sir, can you please share your notes in the group? Okay, ये नोट्स तो लिखवा रहा हूँ क्लास में तो। Okay, sir, यही है। हाँ ये नोट्स यही है। ओके, और जब प्रिंटेड हो जाएंगे तो आपको जो हो जाएंगे तो आपको भेज देंगे दोबारा। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स भेज देंगे आपको। सर एक चीज पूछना था, इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा मतलब पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? क्योंकि सर जब ये बनाएंगे, इसका जो बनाए हुए है तो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। नहीं तो वो तो सिग्नल तो क्लॉक को बताया हुआ रहेगा ना। जब ऐसा बनाया हुआ, जब आपका सिंबल ये वाला है,
अगर आपका सिंबल ये है, सपोज ये डी फ्लिप फ्लॉप है और क्लॉक में ऐसा सिंबल लगा हुआ है क्लॉक में, ओके, एंड दिस इज योर क्यू बार। सर इसमें नहीं, जैसे ये पजल जो बनाए हुए थे उसमें पूछ रहा हूँ सर, उसमें तो ऊपर कंटिन्यूअस में ऊपर नीचे दोनों तो जा रहा है ना। किस किस जिस जो जो आप सर्किट बोल रहे हैं? ये नहीं सर, ये पजल जो बनाए हुए थे वो ये वाला पजल क्या बनाया था मैंने? लेच बनाया था। क्लॉक का जो इनपुट है ना, वो पॉजिटिव एज ट्रिगर को भी हम ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं नहीं, और नेगेटिव एज ट्रिगर को तो नीचे जाना चाहिए। तो पॉजिटिव अभी नेगेटिव कहाँ दिया मैंने? नेगेटिव दिया कहाँ है? ये अभी हमने जो ट्रुथ टेबल लिखा वो पॉजिटिव एज पे नेगेटिव सही है, हाँ, नहीं है। हाँ, सही है, सही है, सही है। नेगेटिव ट्रिगरिंग का मतलब है वो क्लॉक का सिंबल दे रखा होगा यहाँ पे कि आपको ये जो आपका जो सर्किट है ये नेगेटिव ट्रिगरिंग पे काम करेगा कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे काम करेगा। ट्रांजिशन जो है वो नेगेटिव ट्रिगरिंग पे होगा, पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे होगा। तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे होगा या तो ऐसा साइन दे रखा होगा, यहाँ पे आपको सिग्नल में ऐसा ऐसा बता रहा होगा, ये दिखा रहा होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव पे है, अगर नेगेटिव पे है तो यहाँ आपका बबल लगा होगा और एंड दैट सिग्नल वो ऐसा डाउन करता हुआ बताएगा। और ये आपका क्लॉक है, सपोज डी फ्लॉप, डी के लिए बोल रहा हूँ, ये दिस इज योर क्यू बार। तो आपको क्लॉक लगा हुआ होगा ना, वहाँ पे क्लॉक बताएगा कि ये नेगेटिव पे, ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप है नेगेटिव पे ट्रिगर करेगा। ये इसका जो सर्किट है वो कैसा है, नेगेटिव क्लॉक वाला सब कुछ डिपेंड करता है क्लॉक पे ना। तो वो सर्किट तो सेम ही है, जो आगे सर्किट वो सेम ही है, खाली जो क्लॉक आ रही है वो कैसे सर्किट दे रहा है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो क्लॉक का हमको सर्किट चाहिए, वो दोनों का डिफरेंस होगा, ओके। एक होगी पॉजिटिव ट्रिगरिंग क्लॉक, एक होगी नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक। वही तो मैं कह रहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि क्लॉक में डिफरेंस क्यों है, क्लॉक के सर्किट में डिफरेंस क्या है, जो क्लॉक पल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।